अम्ब्रेला ले लिया? ले ले, चलो मास्क लगाओ। वो तो ठीक है लेकिन ये बहुत गर्म है। जल्दी चलो, ऐसा से चलेगा खुद को लगे। स्माइल। My legs got burnt. Sand was very much hot, like hotter than the sun. Hotter than you? Maybe. Oh. I don't know. About the video, ये वाला व्लॉग हम लोग का कन्याकुमारी और रामेश्वरम का होने वाला है एंड एज यूजुअल ये वाला भी हम लोग स्कूटी पर ही कवर करेंगे। तो फॉर ऑल द अमेजिंग व्यूज आउट देयर, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय। रेडी? वी शुड गो। हम लोग बहुत जल्दी निकलने वाले थे बट बिकॉज वी ओवरस्लेप्ट, वी वर वेरी टायर्ड फ्रॉम यस्टरडेज जर्नी, तो इसलिए हम लोग अभी निकलने वाले हैं। और आज हम लोग ग्लास बोट राइडिंग करेंगे और हम लोग धनुषकोडी भी जाएंगे और कुछ एक आसपास बीचेस भी कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द व्यू। और गाइस हम लोग ग्लास बोट राइडिंग के लिए आ गए हैं। इस जगह का नाम होली आइलैंड है। एक्चुअली ये एक बीच पार्क है जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत टाइप के वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं इंक्लूडिंग स्कूबा डाइविंग, ग्लास बोट राइडिंग, स्नॉर्केलिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एक्चुअली ये काफ़ी अनकॉमन प्लेस है, तो इफ़ यू कम टू रामेश्वरम आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यहाँ ज़रूर आएँ टू लाइक एन्जॉय डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर एक्टिविटीज़। और गाइस सभी वाटर एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, तो यू कैन चेक अप देयर। बाकी लेट्स सी व्हाट ऑल कैन वी व्लॉग अप हियर, स्टे ट्यून्ड। Kayaking, snorkeling, windsurfing and stand-up board only. 5 rides are there. This is for family. There comes our life jacket. Life jacket. Safety first. Thank you. चप्पल उतार।
to Dhanushkodi. It has beaches on both the sides, so enjoy the view. Beautiful place, worth it. And only one thing I want to say that, like, we were having this plan of coming here since very long. It was like a dream. It's like a dream come true. Me and Andy, we planned it since very long, but we were not able to come here due to our financial things and something up. But now we are here and it's really beautiful. As you can see this. और आज हम लोग रामेश्वरम टेम्पल जाने वाले हैं. एक्चुअली पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग आर्यमन बीच में जाएंगे, बट आफ्टर सीइंग द गूगल रिव्यूज़ एंड फोटोज़ इट्स लाइक बहुत ही कॉमन है. तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज इट्स कॉमन एज द बीचेस इन चेन्नई. बाकी रामेश्वरम टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि वो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से है, तो इसलिए हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं. और इफ़ पॉसिबल हम लोग व्लॉग करके भी दिखाएंगे, बट इफ़ नॉट पॉसिबल तो वी हैव टू एडजस्ट अप देयर. बाकी टेम्पल विज़िट करने के बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं कन्याकुमारी, जिसमें अराउंड 7 आवर्स लगने वाले हैं, क्योंकि वो 300 किलोमीटर्स है और बीच में हमें स्कूटी को रेस्ट भी देना है, सो दैट वी डोंट गेट इन एनी ट्रबल विद आवर स्कूटी. तो इसलिए जो भी पॉसिबल रहेगा विल व्लॉग एंड शो यू एंड स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल. We're checking out people. तो गाइज़ यही है रामेश्वरम टेम्पल, जो कि वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से. बट मी एंड एंडी वी डिसाइडेड कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है और मास्क भी हार्डली आपको दिख ही रहा होगा, कुछ ही लोग लगाए हुए हैं. तो वी डिसाइडेड कि इट्स नॉट सेफ बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइंस. तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग बाहर से ही दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं. दैट्स इट. सो दिस इज़ द पमन ब्रिज गाइज, एंड यहाँ पर वाटर बहुत क्लियर है. ये वाला साइड लाइक बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं, लाइक स्कूबा डाइविंग एंड स्टफ. और एक दूसरा साइड भी है लाइक दिस साइड, वहाँ पर बताते हैं रेलवे ट्रैक है. तो देखते हैं क्या पर क्या है वहाँ पर. चलो चलो आप. बट इस साइड वाटर ज़्यादा क्लीन है आई गेस. That was all about our Rameshwaram vlog. If you liked our video, please give us a thumbs up and see you next in our Kanyakumari vlog. Bye bye till then. Eating tarmuza. Day. I have the GoPro.